बहुत हुई बहस, अब संवाद होगा। तो लगता है अब जुडिशरी भी किसी हद तक डिवाइड हो गई है। फैक्ट्स होंगे। अब फिस्कल डेफिसिट कोरोना के बाद भारत का बढ़कर हो गया था 9%। सच होगा। तब से वहाँ पे तालिबान का शासन है। सवाल होंगे। साइंस क्या होती है मेंटलिज्म के पीछे? सवालों के जवाब होंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज का सवाल के इस एक और नए नवेले एपिसोड में। आज 132वां जन्मदिन है स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर जी का। देश के संविधान निर्माता, ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर साहब। और आज देश का जो सुदृढ़ संविधान हम सबके सामने है, जिसकी राह पर, जिसके इशारों पर, जिसके नियमों के तहत इस देश का लोकतंत्र चलता है, उस संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर जी। आज का सवाल में चर्चा करेंगे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल लेकिन बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। आज बात करेंगे आरक्षण की, रिजर्वेशन की, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की, और उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, सोशल इंटीग्रेशन को बनाए रखने के लिए रिजर्वेशन जो इम्प्लीमेंट किया गया देश में अलग अलग तरीकों से, अलग अलग चरणबद्ध रूप में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं आकाश जी। आकाश जी लेखक हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है बिकमिंग बाबा साहेब, जिसमें बाबा साहब की जीवनी का नियाजित तरीके से जिक्र किया गया है। उस किताब में और क्या चीजें इन्होंने बताई हैं वो भी इनसे जानेंगे, और जो हालिया परिस्थितियां हैं दलित समाज की भारत में, और खास तौर पर रिजर्वेशन का क्या इम्पैक्ट है, फ्यूचर क्या होना चाहिए रिजर्वेशन का पास्ट क्या रहा, कितना फ्रूटफुल रहा, कितनी नहीं रही, इन सारी चीजों पर आज डिस्कशन करेंगे। आकाश जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, टू बिगिन विद आई वुड एक्चुअली लाइक यू कि आप बताइए सबसे पहले इस किताब में बाबा साहब का किस तरीके से आपने उनके कैरेक्टर को इंटरप्रेट किया है किसी भी इंडियन के लिए, चाहे वो दलित कम्युनिटी से हो या ना हो, चाहे वो जनरल कम्युनिटी से हो या ना हो, उसके लिए उस कैरेक्टर को समझना कितना जरूरी है। और उसके बाद इसी क्वेश्चन में आगे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपकी समझ क्या कहती है कंटेम्पररी सिचुएशन ऑफ द दलित कम्युनिटी इन इंडिया कैसी है? Yes, well, what I focused on, I think, in the book is for a general audience. It's not designed for the Dalit community. It's to inform all Indians, because his significance is, of course, not only pan-Indian, but it's international at this point, which I think we'll have to get into for at least 1 minute. The idea of treating Ambedkar as universal is significant because there's now a global appetite to understand not only Ambedkar, but the Dalit movement as it exists today, its achievements, its advancements, and how to understand, for example, the Black movement in the United States in terms of the parallels to the Dalit movement in India. So it's important to treat Ambedkar with caution, to be careful about how his community will feel about how what is said and what is suggested. But at the same time, this book is written for everyone, not only in Maharashtra but all over the world. So we focus on the facts and bringing new facts to light, things that no one has seen in 70 years about Dr. Ambedkar and his life. ओके, सीधा पॉइंट पे अगर आके मैं आपसे जो मेन सवाल है उस पे डिस्कशन करना चाहूँ तो व्हाट इज योर टेक ऑन रिजर्वेशन? लगभग 7 दशक या उससे ज्यादा का ही वक्त बीत गया है अब तो, जब से रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट किया गया देश में। आपको क्या लगता है कितना फ्रूटफुल था रिजर्वेशन, और आगे कितनी जरूरत है, और अगर कम जरूरत है तो कैसे उसको मॉडिफाई किया जाए? आपका क्या इंटरप्रिटेशन है रिजर्वेशन फॉर दलित, स्पेशली कास्ट बेस्ड को लेकर? Caste-based reservation has been a salvation, not only for the scheduled castes in India, but quite frankly for all of the castes. I'll point out, despite how controversial reservation is, especially amongst dominant castes, that the implementation of reservation, the administration of it, has been very lucrative and significant to the non-scheduled castes. I mean, you realize in the operation, for example, of any business or NGO, there are many kinds of overhead and administrative costs. Nobody discusses this.
Do you think our bureaucracy is packed filled with scheduled caste? And not at all. They form a very small percentage. There's an enormous economic advantage to non-Dalits, to non-SC, in the very massive implementation of reservation all over the country. I've never heard anyone on the news or in any debate speak about this. Another point, that reservation has been extremely effective within the community itself. As I had mentioned, Dr. Ambedkar is now an international figure. We've had stories about implementation of anti-caste-based discrimination laws in Canada and the United States. Why is that happening now? We all know the news. We all hear that North America is doing it. But do you understand why it's happening? It's only happening because of the fruits of reservation. Thanks to reservation policies, there are now generations of Dalit engineers and professionals who have the background and qualifications to go to North America to join the skilled labor market. Now, like Dr. Ambedkar, when these people leave India to go to the US, they think they have liberated themselves from caste. But much to their surprise, they're showing up in the middle of a casteist environment. Now, it has become a sudden awareness for North America that this phenomenon exists only because these newly skilled first generation SC employees are going to the United States. And why do we have a new generation of skilled tech workers and other professionals? Because of the success of reservation. So there are many examples. This is probably more because of the educational reservation if we talk about. But to support your fact, I have got some statistics with me जो ये बताते हैं कि भाई जब रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हुआ तो 90s में जो पार्टिसिपेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स था इन गवर्नमेंट जॉब्स इट वाज नियर अबाउट 8%. और आज जाकर के जब आप ये देखते हो 2017-18 में जो लेटेस्ट डाटा हमारे पास अवेलेबल है तो वो ये बताता है कि इट इज नियर अबाउट 16%, 17%. तो वो पार्टिसिपेशन तो बढ़ गया है. But parallelly, Akash ji, I would like to ask you a question now because you're talking कि यूनाइटेड स्टेट में इस चीज को किस तरीके से देखा जाता है या कैसे इंटरप्रेट किया जाता है या एक नए कल्चर में एक नए सिविलाइजेशन में जब आप आके अडॉप्ट करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है. बट डू यू समवेयर बिलीव दैट दिस इज द राइट टाइम कि अब रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है या फिर लिफ्टिंग अप ऑफ अ कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है हम उस चीज को रेदर देन मेकिंग इट बेस्ड ऑन कम्युनिटी हम उसको थोड़ा मोर इंडिविजुअलिस्टिक बनाए. व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज जब आप फाइनेंशियल रिजर्वेशन की बात करते हो या फिर फाइनेंशियल कंडीशन की बात करते हो तो यू फाइंड सम पीपल who belong to upper caste but they are not financially very sound. बहुत अच्छी आर्थिक स्थितियां उनकी नहीं है. सिमिलरली कुछ इंडिविजुअल्स आपको लोअर कास्ट में ऐसे मिल जाएंगे जिनकी आर्थिक परिस्थितियां बेहतर है. तो मेरा आपसे सवाल ये है सीधा सीधा कि क्या ये वो टाइम ठीक है कि अब रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको कम्युनिटी बेस्ड ना बना के ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक बना दिया जाए. Yes, it's an understandable argument, and it mixes two things together. It mixes together our new economics, the way that, for example, governments can individually send money through electronic or digital currencies to individuals, with a new libertarian attitude that community rights are no longer significant and we need to focus on individual rights. But there's a fundamental misconception. And that misconception is that reservation is about money. Reservation is not about money. Reservation is about a social condition, a social situation. And so poverty is another matter, and poverty may indeed be dealt with on an individual basis. But social exclusion is a community issue. It's a phenomenon that occurs not for a poor upper caste person, but for a scheduled caste or Dalit person of any class, whether they are elite or whether they are impoverished. So we can't mix these two issues about finance and about social exclusion and marginalization. They're very different. Consequently, you can't deal with a community problem through an individual solution. You can deal with impoverishment and poverty that way, but you certainly can't deal with untouchability, with atrocity, with exclusion in that way.
आई डू एग्री विद यू, बट द थिंग विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू वो बात ये है कि अगर आप सोशल एक्सक्लूजन की बात कर रहे हैं या सोशल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो एक अच्छा समाज बनाने के लिए जो एक ये मैसेज पास ऑन करता है, या फिर जिस समाज में किसी भी एक कम्युनिटी को हाशिए पे नहीं रखा जाता, उस समाज के लिए क्या रिजर्वेशन अभी भी एक अच्छा विकल्प है, या अच्छा नहीं तो क्या ओनली विकल्प है, या फिर इसके अलावा कोई और ऑप्शंस आपको नजर आते हैं जिसके जरिए आप एक अच्छा सोशली इंटीग्रेटेड सोसाइटी बिल्ड कर सकते हैं जिसमें हर कम्युनिटी का अपना अपना एक प्लेस है, वर्ण व्यवस्था जैसी चीजें खत्म होती हैं? Harshit, there are 1,000 solutions that could substitute reservation and do it in a manner that would be far more efficient, far more just, and far more effective. But a solution is just an idea that has to be implemented. If there were people acting in good faith to implement such ideas, we would not need reservation in the first place. The very fact is that you can produce a libertarian solution, you can produce a solution based on individual rights, you can produce a solution based on the specifics of every single family. I mean, the way our governments and technologies surveil us and our intimate details these days, they know everything about us, and they could consequently address our problems specifically. There's no issue there. The problem is that what government, what administration, what group of social and political and legislative elites are in fact interested in addressing this problem in a sincere manner. All of these institutions are dominated by the dominant and upper castes, and if they were sincerely interested in solving the problem, they already have the means to solve the problem with the existing law, with the existing structures. It is not that reservation is the problem, it's the failure to implement any measures in good faith that has created this long drag of reservation. नाउ बिकॉज यू टॉक्ड अबाउट डोमिनेशन ऑफ द अपर कास्ट, तो एक सवाल सीधा सीधा ये बनता है कि जो दलित के ऊपर एट्रोसिटीज होती हैं, जो अपराध किए जाते हैं दलित लोगों के साथ, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, आप अक्सर ऐसा सुनने में मिलता है कि देश के रूरल एरियाज में मॉब लिंचिंग हो गई, किसी दलित दंपति को मार दिया गया चोरी के इल्जाम में, अलग अलग वजहों से। आपने डोमिनेशन की बात करी, खास तौर पे वो लोग जो सिस्टम में मौजूद हैं, सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद वो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को एक तरीके से प्रमोट करते हैं जस्ट बिकॉज वो खुद अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह की एट्रोसिटीज को रोकने के लिए, इस तरह के अपराध को रोकने के लिए, और जो सिस्टम का लूप होल आपने जिसका जिक्र किया कि सिस्टम का हिस्सा अगर उन लोगों को बना दिया गया है जो लोग कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं, अपर कास्ट से आते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं लोअर कास्ट के लोगों को, तो उसको रोकने का फिर क्या सही तरीका आपको समझ में आता है? Well, one thing that could be done far more effectively if there was political will would be to educate people about this properly. I'll give you an example. You know very well that reservation policies are always in education are always protested by the middle castes and upper castes. Whenever there's an issue at any IIT or IIM, or whenever there's a discussion about the so-called lower standards or decreasing merit for the scheduled caste, then the dominant castes go marching in the street. Now, why are they angry? Why are they upset? Obviously, because when there's a seat reserved for an SC, that is one seat not available for a general category. So who is the problem here? Is the problem the SC, or is the problem the fact that we have so limited funding for our academia that we don't have enough seats for everybody? So the problem here is not with reservation or education policy. The problem is that the government has fallen short on its responsibility to have public education for all Indians. And yet, instead of focusing on the government failure, government is quite happy to have us fight one against the other, SC against GC, against general category, fighting over crumbs, when the government could easily spend double its expenditure on education and make room for everybody. So a proper alignment of who is responsible for the unequal treatment that we feel, let's say as upper caste people, who is responsible for the reverse discrimination that upper caste people feel they are suffering. That actually sounds to be a like very wonderful debate, Akashji, because what you are pointing at is
the limited resources which government is producing. You're not pointing at that reservation is wrong. आप ये नहीं कह रहे हो कि reservation गलत है. Neither you are saying that people who are opposing reservation are wrong. But what you are trying to say here is कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है जिन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उस रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उन रिसोर्सेज को एक्सपेंड कर दिया जाए, सो दैट ना ही रिजर्वेशन मिलने वालों को कुछ कम लगे, ना ही जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला है उनको उससे दिक्कत हो. उनकी सीट्स काट के यहाँ सीट्स ना दी जाए, लेकिन इनको इनका हक देने के लिए उन सीट्स को एक्सपेंड कर दिया जाए. इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? Yes, exactly. So this is an easy solution to what turns out to be violence, because the feelings of being treated unfairly, of things being taken away from us and given to others, this is part of what ignites violence. Not merely prejudice, not merely some manuvadi ideas. On the ground, people are feeling things are taken away from them. It's the government's responsibility to give those things back, but the government fails, and consequently, people take out this frustration on the scheduled castes, and atrocities are the clear product of government failure. All right, to conclude, I guess this will be a very good solution oriented conversation from Mr. Akash. Akash ji, thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए. It was rather a very wonderful conversation. आप सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. जुड़े रहिए अगले एपिसोड्स के लिए. बहुत शुक्रिया. नमस्कार. We started Mojo right here in this basement. Just 4 people. 4. And now we're about to hit our first 1 million subscribers. So this is to say thank you to all of you for your support, for your respect, and for your encouragement. We've always gone to where the story is. During the pandemic, when television's big anchors were hunkered down in their studios or at their homes, we hit the road. We traveled from Delhi to Kerala, covering 30,000 kilometers in our small car, reporting from inside ICUs and inside slum tenements. Whether it's flash floods or war zones, we've always put our boots on the ground. In fact, we're just back from Punjab, tailing the Khalistani fugitive Ambedkar Singh. And through all of this, we have always put you, the people, first. In an age of partisan polarized media where most journalists are either chamcha ya morcha, we believe the story is sacred and the truth of the story is what matters. And now as we get ready for the next step, we need your help. Become a Mojo member and get first access to all our big interviews. Get a chance to ask our newsmakers questions. Get a chance to write and report for us for both our website and our channels. And also, interact with me and my colleagues directly through AMA sessions. Literally, ask me anything. Click on the join now right next to the subscribe button, and yes, also subscribe if you haven't yet, and become a Mojo member for just 159 rupees a month. Hope to see lots of you in our community. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.